एवरीवन, बच्चों हम चैप्टर 6 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों हमने पिछले लेक्चर में देखा था व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इंडिया हैज गॉन थ्रू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। इसका क्या मतलब होता है? जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, जो रेट ऑफ ग्रोथ है, दैट इज वेरी हाई कंपेयर्ड टू द रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और जो इकोनॉमी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है कंपैरेटिवली, तो देयर इज एन इम्बैलेंस। इसे हम कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। क्यों होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? बिकॉज जो बर्थ रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू द डेथ रेट। दैट इज व्हाई द नंबर ऑफ पीपल दैट आर अराउंड अस इज वेरी हाई, है ना। ये क्यों हो रहा है? इंडिया में हाई बर्थ रेट क्यों है, ये समझना है हमें आज के इस लेक्चर में। सो लेट अस सी पेज नंबर 39 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट। इन्हें याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट कोड बनाया हुआ है। द निमोनिक टुडे इज IPJAM. The mnemonic is IPJAM. Okay? IP एड्रेस जो होता है हमारा वही यहाँ पे मैंने यूज किया है IPJAM. What do these stand for? Let us see first one. I stands for illiteracy. अगर लोग illiterate है, they are not educated enough, then obviously the population is going to increase because उन्हें पता नहीं है that ज्यादा पॉपुलेशन के वजह से क्या क्या नुकसान होता है। उन्हें ये नहीं पता है that पॉपुलेशन कंट्रोल के मेजर्स क्या है। इलिटरेसी की वजह से पॉपुलेशन बहुत इंक्रीज होती है। दैट इज द रूट कॉज। लेट अस रीड इलिटरेसी। द परसेंटेज ऑफ इलिटरेट्स इन द कंट्री इज रीजनेबली हाई. The attitude of illiterate people towards marriage and childbirth has remained rigid. Low level of literacy among females is also responsible for a high birth rate. As we know that बहुत ज्यादा illiteracy होने के वजह से यहाँ पे हम problem face करते हैं because they are not aware of the difficulties of high population. Okay? तो पहला point है हमारा illiteracy and second very important point is poverty. P stands for poverty. Let us see. यहाँ पे है हमारा point number 7, widespread poverty. Poor people prefer large families because they feel that more children means greater economic support. Okay? तो जैसे लोग poor होते हैं, हम देखते हैं बहुत बार सड़कों पे भी हम देखते हैं that even though they are living on the streets, the number of children that they have is very high. Okay? तो ये क्यों होता है? उन्हें ऐसे लगता है जब जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा hands होंगे कमाने वाले. Okay, but they tend to forget this that उतने ज्यादा stomachs भी होंगे. You have to fill those many stomachs, isn't it? So because of illiteracy and poverty, they go hand in hand, बच्चों. Because of which they lack the understanding that ज्यादा population means a strain on the resources. पहले दो reasons हमने देखे IP, that is illiteracy and poverty. आगे देखते हैं JAM. J stands for Joint Family System. Let us read. Joint Family System. Point number 5. There is no individual financial responsibility in a joint family. Hence, existence of joint family is also responsible for high birth rate in India. क्या होता है जब joint family होती है, जो financial responsibilities होते हैं of raising the kids, वो डिवाइड हो जाते हैं. पेरेंट्स एक्चुअली डू नॉट फील द पिंच ऑफ हैविंग हाई नंबर ऑफ चिल्ड्रन. ओके, तो जॉइंट फैमिली के वजह से ये समझ में नहीं आता है दैट द कॉस्ट ऑफ रेजिंग द किड्स इज सो हाई. सो द थर्ड पॉइंट इज joint family system. Next is A. A stands for two things here: agriculture and awareness. So let us look at our fourth point. That is dependence on agriculture. Indian agriculture is driven by manpower. Agriculture में हमें क्या चाहिए? बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है ना, because इतना ज्यादा मैकेनाइज्ड नहीं है इंडिया का एग्रीकल्चर. और वी आर एन एग्रेरियन कंट्री, तो हमारे ज्यादा लोग जो है वो एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज करते हैं, जहां पे उन्हें जरूरत है ज्यादा फैमिली मेंबर्स की टू असिस्ट देम इन देयर एग्रीकल्चर. And that is why this leads to growth in population. That is why they feel that having more children will be beneficial to them. Okay. So in India, there is over dependence on agriculture. More number of children in the family implies more labor force available for फील्ड वर्क. उन्हें लगता है कि ज्यादा बच्चे होंगे तो हमें असिस्ट कर पाएंगे खेतों में काम करने के लिए. ओके, सो बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस. लेट अस रीड. हमारा यहाँ पे 8th पॉइंट है
lack of awareness about family welfare services. Most of the people are ignorant about availability of various means and techniques of family planning. बहुत बार people are not aware of family planning measures because of which the birth rate is very high. Okay, तो हमारा last point यहाँ पे है M, and M stands for two things here: marriage and male child. Let us see, marriage के दो points है हमारे पास: universalization of marriage and age of marriage in India. Let us see point number 2 and 3. Universalization of marriage. In India, marriage is considered as both religious and social obligation. हम आसपास भी बहुत बार देखते हैं, whenever people are in their 20s, they are always asked by the parents, by the family members that when are you going to get married, isn't it? तो इंडिया में marriage is very very important. उसे बहुत ज्यादा importance दिया जाता है. Even with the spread of education, attitude of people towards marriage remains unchanged at large. And because of marriage, जाहिर है obviously that the families are going to increase. Okay, तो universalization of marriage है, and secondly age of marriage. इंडिया में बहुत सालों तक people used to get married very early. बहुत जल्दी उनकी शादी हो जाती थी. And obviously if you get married at an early age, the fertility period is going to be high, because of which you are going to have more kids. Okay, age of marriage. In India, the legal age of marriage is relatively lower compared to other countries. It is 18 years for females and 21 years for males. Low age of marriage has resulted in high birth rate. Okay, so marriage से related दो points हमने देखे बच्चों: universalization of marriage and age of marriage. And last, and one of the most important factors which applies to Indian population is male child. हम देखते हैं that बहुत बार, at least हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के जनरेशन में तो हमने ये बहुत बार सुना हुआ है that मेल चाइल्ड का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है इंडियन फैमिलीज में. सो टिल यू हैव अ सन, many times people used to keep on having many children till they have a son. Okay, तो ये बहुत ज्यादा दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के that they should have a son, है ना. हमारे परिवार को वारिस चाहिए, है ना. हमने हिंदी मूवीज में भी ये बहुत बार देखा है, एंड आसपास भी हम ये बहुत देखते रहते हैं बच्चों. ओके, सो दैट नीड्स अ शिफ्ट. उसके वजह से पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है. सो लेट अस सी द लास्ट पॉइंट: preference for male child. Many Indian parents are opting to continue having children till they have a son or desired number of sons. This is known as son meta preference. Okay, जब हमें बॉय नहीं हो जाता है, we keep on having kids. Okay, तो इसके वजह से there is an increase in the population. Okay, तो बच्चों ये हमने आज यहाँ पे 8 points देखे हैं for increase in the population, increase in the birth rate in India, and this is the short code IPJAM. Let us quickly revise. IP stands for two important factors: illiteracy and poverty. Next, JAM, J से start होता है joint family system. A से है दो चीजें: lack of awareness, agriculture, और M से तीन चीजें हैं: marriage and male child. Marriage में universalization of marriage and age of marriage. ओके, आई होप ये सब आपको बहुत ही अच्छे से समझ गया है बच्चों. अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, जाते जाते डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड लेट मी नो, एंड डू हिट द लाइक बटन, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स. मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.